And right now we have logged into the hospital field user. As such, in the police field user login ID, you have 4 buttons: home, add, list, and request. And under the request button, you'll have drunkenness list, postmortem list. So these are all the requests that are gotten from the police station. So we gave just the drunkenness request. So just the drunkenness request alone came under this drunkenness list. So had we have given the postmortem request as well, we might have got the postmortem request under this postmortem list. Since we don't have any data related to it, it displays as no data. So, Pawanji, if you want to explain it. अभी देखिए, जैसे पुलिस फील्ड ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे ये वाला ड्रंक एंड ड्राइव का केस लग रहा है, तो उन्होंने ड्रंक एंड ड्राइव रिक्वेस्ट दी थी हॉस्पिटल को. अब हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फील्ड यूजर ने लॉगिन किया है. लॉगिन करने के बाद उनके सामने भी वो 4 बटन दिख रहे हैं नीचे, रिक्वेस्ट, ऐड, लिस्ट और एक बटन होम का. तो उन्होंने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया. रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद उनके सामने 3 टैब्स आ रहे हैं, ड्रंकननेस, पोस्टमार्टम और रेफरल. तो पुलिस फील्ड ऑफिसर ने कौन सी रिक्वेस्ट दी थी? ड्रंकननेस की. तो ड्रंकननेस में आपको ये वाली टाइल दिख जाएगी जिसमें एक्सीडेंट आईडी आपके सामने आ रहा है और उसके बाद आ रहा है रिक्वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम पुलिस फॉर दिस पेशेंट एंड दिस इज द सिंपल इंजरी हॉस्पिटलाइज्ड केस. तो जैसे ही उनके सामने टाइल आएगी उसके बाद वो गो टू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे वो प्रोसीडिंग्स करेंगे. नाउ ईश्वर विल शो हाउ इट विल बी, हाउ दे विल बेसिकली हैंडल दिस रिक्वेस्ट. Okay, thank you. Yeah, thank you, Pawanji. So once you have got the request for this drunkenness, it will show you the go-to button. Click on that. It will automatically take you to the page where we have already given this patient register. So we have linked the accident ID to this patient, right? So once you give the go-to button, it will directly take you to the patient registry that we have already entered before. And to an addition of accident ID to what it is linked to, what this patient is linked to, and where exactly the landmark and the details of the accident that he has been linked to is displayed under the page here. So right now we got intimation for request for drunkenness certificate. So click on the certificates and intimation tile and scroll down to add details for the drunken drive. So I'm going to click on add details now. So you have 3 buttons: add details, upload, and view. Click on add details here. You'll have the details of the patient at the top of the page. And once you scroll down, this is where the user can add the details of the details to generate the drunkenness certificate. Click on whether this particular patient was under arrest or not. In this case, no, he was not arrested. And the consent from the victim to before you take the drunkenness certificate test, drunken drive test. Sorry. So consent from the victim. Since this is a demo, I'm just giving what it is. And the date and time of examination, date and time at which this drunken drive test was performed. So it would be 12th August or at 3:42 p.m. Okay. And the history of alcoholism of this victim. History of alcoholism. And the smell of alcohol in breath, whether it was present or not. The smell of alcohol was present or not? Yes, present. And the speech, was it normal or thick and slurred and incoherent? It was thick and slurred. And the manner of clothing, was he decently dressed or disordered or soiled or torn? In this case, it is soiled. And the general disposition, was he calm, talkative, abusive, or aggressive? Talkative. And the self-control, was he normally, how was his self-control? Was he normal or impaired? Was he not in his control? In this case, it is normal. And the type of memory, was his memory normal or impaired? In this case, it's going to be normal. And the orientation of time and space, it's basically the awareness of the time and the place where he was located at. It is normal. He is oriented.
And the reaction time, was he normally reacted or delayed reacted? It is going to be a normal reaction. And the gait, was he able to stand upright or unsteady, or was he unable to stand upright? In this case, it's going to be unsteady. And the finger toes test, it is going to be positive here. And the Romberg sign test is going to be positive as well. These two are the tests that are done for producing the drunkenness certificate. And was his blood and urine preserved or not preserved? In this case, it is preserved. And what is his reflex? Was he normal or exaggerated or sluggish? It is going to be exaggerated. And was there any other findings or injuries on the body? This basically is what it is. So if the initial treatment, during the initial treatment, if the physician failed to address any of the injuries or any other findings on the body, that can be given as a remarks here. Any other findings on the body? So these are all the details that are required to generate the drunkenness certificate. So Pavanji, you can explain it here. यस, जैसा गो टू बटन आपने देखा था, गो टू बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीछे वाला स्क्रीन आएगा। उस पीछे वाले स्क्रीन पे हमारे पास ऑलरेडी हमने एक्सीडेंट आईडी से पेशेंट आईडी को लिंक किया हुआ है, इसलिए पेशेंट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर वहां पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ ड्रंकननेस आएगा, उसमें हमें ऐड डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये वाला ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स दी हैं। प्लीज स्क्रॉल अप ईश्वर जी। दुर्गा प्रसाद जी प्लीज म्यूट। दुर्गा प्रसाद प्रधान जी रिक्वेस्ट टू प्लीज म्यूट। ओके, सो जैसे ही आपके सामने स्क्रीन आएगा उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म क्या है, आपको वो डालना है। उसके बाद आपकी ब्रीथ में मींस आपकी सांसों में स्मेल प्रेजेंट है या नहीं है अल्कोहल की, वो हमें डालना है। प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट डालना है, अदरवाइज मतलब एब्सेंट डालना है। उसमें जो ऑप्शंस नहीं वो आप चूज कर लेना। उसके बाद स्पीच, जैसा हम बोल रहे हैं वो स्पीच कैसी है, नॉर्मल है या फिर थिक है। थिक मीन्स जैसे भारी आवाज होती है ना वो है, या फिर स्लर्ड मीन्स वो बोलते बोलते मतलब हकला रहा है या फिर मतलब जल्दी मतलब प्रॉपर बोल नहीं पा रहा, तो वो हमें स्पीच चूज करनी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लोथिंग। उसने जो ड्रेसिंग सेंस है उसका वो कैसा है, सॉइल्ड है, नॉर्मल है या कैसा है। उसके बाद जनरल डिस्पोजिशन कि वो ठीक तरीके से बात कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सेल्फ कंट्रोल, उसका अपने ऊपर कंट्रोल कैसा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। उसकी मेमोरी मीन्स उसकी याददाश्त मतलब ड्रंकननेस के बाद कैसी है, जब वो ड्रंकननेस का टेस्ट करें तो उसको कितना याद है, तो वो चीज हमें डालनी है, नॉर्मल है या फिर नॉट नॉर्मल। ओरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस कैसा क्या है वो हमें चूज करना है। रिएक्शन टाइम उसका कितना है वो चूज करना है। उसके बाद गेट मीन्स वो प्रॉपर उसके बाद ठीक खड़ा हो भी पा रहा है या नहीं ठीक से खड़ा हो पा रहा, तो वो हमें ऑप्शन चूज करनी है। उसके बाद जब भी हम ड्रंकनेस टेस्ट करते हैं तो उसमें दो प्रॉपर टेस्ट होते हैं, वन इज फिंगर नोज टेस्ट एंड सेकंड वन इज रोमबर्ग साइन। सो ये हमें डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट उसका क्या रिजल्ट आता है वो हमें चूज करना है। उसके बाद स्पेशल एग्जामिनेशन ब्लड और यूरिन का वो प्रिजर्व है या अनप्रिजर्व है, तो ये ऑप्शन चूज करनी है। उसके बाद रिफ्लेक्सेस जो हमारा ड्रॉप डाउन है इसमें हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करनी है। देन हमारा इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी, एनी अदर फाइंडिंग्स, अगर हमारी और कोई फाइंडिंग्स हैं तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो दीज आर द फील्ड्स दैट यू विल हैव टू चूज एंड सेलेक्ट। पोस्ट दैट यू विल हैव टू क्लिक ऑन द सेव। उसके बाद आपको ये सारी इंफॉर्मेशन सेव करनी है। Okay, thank you, please continue. Yeah. So once you have given all these required details to generate the drunkenness certificate, you can click on save. So once you click on save, it will say the certificate of drunkenness has been generated. And after the save button, after the details have been added, you will see an addition of extra button called generate here in between add details and upload, which you cannot see under say discharge summary or a postmortem details. So what this is, click on generate to generate the drunken drive certificate, drunkenness certificate. I've clicked on the generate. So this is the drunkenness certificate. So this is generated
from the details that we gave. So you can see the identification marks that we gave, the manner of clothing, general disposition, self-control, orientation of time and spaces, and his pulse, his BP rate. So what is the name of the doctor, in which institution it was done. So every details that we gave to generate this particular drunkenness certificate is reflected in this certificate. And the user can download it. I'm not going to do it right now. The user can download it, get the necessary signatures from the officials. For example, in an hospital, a chief doctor's signature would be mandatory to make it an official document, to upload it and submit it to the police. So the user can download it, print it, get signatures from the chief doctors or any officials, scan that copy, upload that copy, and that uploaded copy can be viewed here. And as such, in the and that's it with the drunken drive. So we are done with the drunkenness certificate, and the next one would be the wound certificate, generation of wound certificate. I'll just explain. Pavanji, you can explain it. You can explain this alone right now. या सो ड्रंक एंड ड्राइव का जैसे हमने सारी डिटेल्स ऐड कर दी थी, जैसे ही हम ऐड करके सेव करेंगे आपके सामने एक कंफर्मेशन बॉक्स आएगा. सो आप कंफर्मेशन बॉक्स पे जैसे ही ओके कर देंगे तो आपके सामने ड्रंक एंड ड्राइव वाली टाइप जो आप देख रहे हैं, इस टाइप में एक नया बटन ऐड हो जाएगा, जनरेट. तो जनरेट बटन आप देख रहे हो, जैसे ये डिस्चार्ज समरी ये हमने परफॉर्म नहीं किया तो यहाँ पे हमें कोई जनरेट बटन नहीं दिख रहा, या नीचे पोस्टमार्टम की टाइप है, इसमें भी आपको कोई जनरेट बटन नहीं दिख रहा. वो इसलिए दिख रहा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डिटेल्स ऐड ही नहीं करी, ना डिस्चार्ज समरी की हमने डिटेल्स ऐड की है, ना पोस्टमार्टम की ऐड की है. हमने सिर्फ ड्रंकन ड्राइव की डिटेल्स ऐड की है. डिटेल्स ऐड की है इसलिए यहाँ पे जनरेट बटन दिख रहा है. तो जनरेट बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमने डिटेल्स ऐड की है ना, तो ड्रंकननेस सर्टिफिकेट वो ओपन हो जाएगा. जैसे वो ओपन होगा वो बेसिकली एक ड्रंकननेस सर्टिफिकेट होगा. वो ड्रंकननेस सर्टिफिकेट हम ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद हमें जो भी चीफ डॉक्टर्स हैं, सीएमओ वगैरह हैं, उनके हम सिग्नेचर्स, स्टैम्प ये दोनों ले सकते हैं. ये लेने के बाद इसको हम फर्दर अपलोड कर सकते हैं. अपलोड जैसे हम करेंगे तो ये वाली जो हमारी ड्रंक एंड ड्राइव का सर्टिफिकेट पुलिस ने हमें रिक्वेस्ट किया था, तो ये दोबारा उनके पास चला जाएगा. और अपलोड करने के बाद हमारे पास ये लास्ट बटन है व्यू का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसको जो अपलोडेड सर्टिफिकेट है उसको हम व्यू भी कर सकते हैं. ईश्वर जी प्लीज कंटिन्यू. Okay, thank you, Pavanji. And for example, if that particular hospital has their own format or has a format that is approved by the government, then they need not give the ad details. So they can directly scan that copy, that format of the signatured copy, and click on the upload, from where the signed copy can be uploaded and viewed here. So this upload and view is given. So once you upload it, it won't be submitted to the police station. This view button is given because to check whether we have uploaded a correct file or not. So let me just give this for, let me just download and upload the file and show you for the drunken drive alone right now. I've clicked on the generate button here and downloading it. Right now I've downloaded the drunkenness certificate, and for example, say I've printed this copy, got signatures from the necessary officials, and right now I have to scan that copy and upload it. So I'm not going to get any signatures, so I'm just going to upload the same file that I have downloaded right now. Upload it, and it will ask for choose file. I'm going to choose the file. Desktop. So this is the DD certificate is what we downloaded it right now. Open it. And once you have clicked on open it, the documents are uploaded successfully. You will get a notification. Click on OK. And once you
click the view button here, you can view the uploaded file here. So this is the file that we uploaded right now. So this is the certificate of drunkenness. So as we saw before. And Okay, the same so case. Yeah, okay. ईश्वर जी, जस्ट अ मोमेंट, देयर इज अ स्मॉल करेक्शन फ्रॉम माय साइड। जैसा कि मैंने बोला था, आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद पुलिस को व्यूएबल हो जाएगा, मींस विजिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें जो हमने डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद नेसेसरी सिग्नेचर, स्टैंप वगैरह जो भी लेना है वो हम ले लेंगे। उसके बाद स्कैन कॉपी को हम अपलोड कर देंगे। अपलोड जैसे करेंगे तो उसके बाद हमारा जो व्यू बटन है ना, ये हमारा कंफर्मेशन के लिए कि हमने जो अपलोड किया है वो कैसा दिखता है। अभी वो पुलिस को आई थिंक व्यूएबल नहीं है, विजिबल नहीं है। एम आई राइट ईश्वर जी? Yes, Pavan ji. That is for the confirmation. The view button is for the confirmation. Yeah. Please continue. Okay. Thank you, Pavan ji. Yeah. And as such, in the wound certificate as well. So I'll just walk you through what are all the details that are required to generate the wound certificate. The accident register number and history as stated by the injured. What is the history of the injury happened to him, and the details of the injuries, those details can be entered here. These two are to be entered by the user, and these are not the drop down boxes. So once the details have been given, the user can click the save button, and Pawanji, you can explain what it is. ओके, जैसा कि अभी आपने पहले ड्रंक एंड ड्राइव का देखा था कि हमें किस तरीके से पुलिस ने रिक्वेस्ट किया, फिर उसके बाद हॉस्पिटल के फील्ड यूजर ने टेस्ट परफॉर्म किया, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद किस तरीके से हमने जनरेट किया, जनरेट करने के बाद उसको हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद नेसेसरी सिग्नेचर एंड स्टैंप लिया और उसको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद जस्ट हमने व्यू के बटन पे जाके चेक किया कि वो हमने जो अपलोड किया वो किस तरीके से दिखता है। सिमिलरली हम बाउंड सर्टिफिकेट के लिए किस तरीके से रिक्वेस्ट देंगे, किस तरीके से हम उसमें इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, वो अभी आप सामने वाले स्क्रीन में हमने देखा है। सो इन द सिमिलर मैनर वी कैन ऑल्सो डू द बाउंड सर्टिफिकेट। बाउंड सर्टिफिकेट में हम सिमिलर काम कर सकते हैं, जैसा कि हमने ड्रंक एंड ड्राइव के लिए देखा था। ईश्वर जी, या प्लीज कंटिन्यू। यहाँ पे हमें हिस्ट्री डालना है, उसके बाद डिटेल्स ऑफ इंजरीज डालना है, अगर बाउंड सर्टिफिकेट हम जनरेट कर रहे हैं। Okay. Thank you, Pawanji. Yeah. So I've just given these two entries and clicked on save. And again, as such, in the drunken drive, you will get another generate button here. Click that. So once you click the generate button, the certificate would be generated. So this is the wound certificate. So with the details that we gave, history as stated by the injured and the details of injury. So every other details are gotten with the details that we entered to generate the wound certificate. And download that copy, print that copy, get the signatures uploaded, and you can view it here. And the next one is the discharge summary. So discharge summary is the these are all the details that are required to generate the discharge summary. So the name of the doctor's registration number, what was the condition of the patient while getting admitted, and what are all the results of the clinical investigation, and what are all the details of the treatment given, what is the condition of the patient while discharging, and what is the advice given to that patient by the medical officers while getting discharged, and if there is any remarks, if there is any other details that needs to be added, that can be given under this remarks field, and click on save. And Pawanji, you can just explain. Thank you ईश्वर जी। जैसा कि सबसे पहले आपने देखा कि हमने ड्रंक एंड ड्राइव सर्टिफिकेट जनरेट किया, उसमें हमने आपको सारे स्टेप्स दिखाए। सिमिलरली उसके बाद हमने बाउंड सर्टिफिकेट जनरेट किया, जिसमें सबसे पहले हमने डिटेल्स फिल की सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए। पोस्ट दैट उसको हमने जनरेट किया, जनरेट करने के बाद उसको हमने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद व्यू किया। उसके बाद अगर हमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जनरेट करना है
सो हम ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ट्रीटमेंट स्लैश डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इसमें हमें नेसेसरी डिटेल्स डालनी है, लाइक नेम ऑफ द डॉक्टर्स नेम क्या है, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एडमिशन के टाइम उसकी क्या कंडीशन थी, उसके बाद रिजल्ट ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस इफ एनी, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस जो भी हैं उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसके बाद इंजरीज के लिए हमने क्या क्या डायग्नोज दिए हैं। प्लीज स्क्रॉल डाउन ईश्वर जी। उसके बाद हमने क्या क्या उसको ट्रीटमेंट दिया है, सर्जिकल और अदर प्रोसीजरल जो भी हमारे ट्रीटमेंट दिए हैं उन सबकी डिटेल्स हम डालेंगे। कंडीशन एट डिस्चार्ज, जिस टाइम हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया उसकी क्या कंडीशन थी वो हमें इस फील्ड में डालना है। प्लीज स्क्रॉल डाउन। उसके बाद उसको डिस्चार्ज के टाइम डॉक्टर से या फिर सीनियर किसी मेडिकल ऑफिसर से उसको क्या एडवाइस थी एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज वो हमें डालना है। इसके अलावा और कोई रिमार्क है तो वो हमें इस लास्ट फील्ड में डालना है और उसके बाद हमें सेव करना है। ईश्वर जी, आई एम डन, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, Pawan ji. Yeah. So once you have given all these details, a save button can be clicked, and that you'll get the notification that it is saved. And again, as such, the wound certificate and the drunken drive certificate, you will get a separate generate button where you can click on that to generate the certificate, discharge summary. And again, as such, yeah, download that certificate, print that copy, get signature from the officials, scan that copy, upload that copy, and that uploaded copy can be viewed here. And come down to the postmortem, add details, and you can add the details, the alleged cause of death as per the inquest, as per the postmortem. The cause of death can be, the details of the cause of death can be entered here, and the assisted or assisting officer, the name of the assisting officer to the medical officer, and the remarks if there is any. These 4 details can be added in order to generate a postmortem certificate. And once all these details have been given, save button can be clicked. Anji? या थैंक यू ईश्वर जी। जैसा कि देखिए हमने अभी तक 3 सर्टिफिकेट्स देखे थे। सबसे पहले हमने ड्रंक एंड ड्राइव का देखा, उसके बाद हमने सेकंड कौन सा देखा था, एनीवन प्लीज? वॉन्ग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने देखा कौन सा, डिस्चार्ज समरी, ठीक है। जैसे हमने 3 सर्टिफिकेट, सबसे पहले इंफॉर्मेशन फिल की, इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हमने सेव किया, सेव करने के बाद हमारे पास जनरेट का बटन आ जाता है। हमने जनरेट का बटन क्लिक किया, उससे हमारा जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाता है। जनरेट करने के बाद उसको हम फर्दर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद नेसेसरी सिग्नेचर स्टैंप ले सकते हैं और उसके बाद उसको स्कैन करके अपलोड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ही हमने अपलोड किया उसको फिर हमारे सामने लास्ट बटन दिया है व्यू का हर टाइप में, तो उसको हम व्यू कर सकते हैं कि हमने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो किस तरीके से दिखता है। लास्ट हमारा है पोस्टमार्टम। इन केस ऑफ एनी फैटेलिटी देन विल नीड टू जनरेट द पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट। जैसे हम पोस्टमार्टम पे ऐड डिटेल्स करेंगे सो हमारे सामने ये 4 डिटेल्स पूछेगा। अलेज्ड कॉज ऑफ डेथ, हमारा डेथ का जो है वो क्या रीजन है वो हमें डालना है। असिस्टेड बाय, किसने इसको असिस्ट किया है, मेडिकल ऑफिसर कौन है, और अगर इन केस कोई रिमार्क्स है वो डालना है। और उसके बाद हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट जो है वो सेव हो जाएगा और उसके बाद हमारे सामने जनरेट बटन अपीयर हो जाएगा। जनरेट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो पोस्टमार्टम की हमने डिटेल सेव की है वो हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। जनरेट करने के बाद सिमिलरली हमें जैसे बाकी सर्टिफिकेट्स हैं उनको हमने डाउनलोड किया, उसके बाद नेसेसरी सिग्नेचर स्टैंप लिए, अपलोड किया, अपलोड करने के बाद हम वो व्यू कर लेंगे। ईश्वर जी प्लीज कंटिन्यू। Okay, thank you, Pawan ji. Yeah. So once you have given all these details, click on the save button. And once you click on it, you'll get the notification as it is saved. And again, yeah, a separate generate button would be appeared. You can click that, download the postmortem certificate, get the signature copy, print, scan that copy, upload that copy, and that uploaded copy can be viewed for the confirmation before submission. So you can see the last tile as report submission. Click on that. So in this, there are 4 certificates that we generated, and this is the submitted on. So you can click on this submit.
So we just completed the whole process of the drunkenness certificate. So I'm just going to click on submit here. Submit, and will ask for the confirmation. Do you want to send intimation to police? Do you want to submit this particular drunkenness certificate to the police? Click on OK. And once you click on OK, the documents have been moved successfully to police department. You'll get the notification as such. Click on OK. And once you click on OK, you cannot submit that particular report again and again. Once you submit the, for say, in this case, we have submitted the drunkenness certificate, and that instead of the submit button, you will get when it was submitted. It was submitted on 13th of August 2021. And as such for the other cases as well, other certificates as well, once you click on the submit button, the date of submission appears and the submit button disappears. And once you submit, this submitted file will directly go to the police station that this hospital is registered to, which is the TNS Demo 1 police station in this case. And Pavanji, you can explain. थैंक यू ईश्वर जी. देखिए, अभी तक हमने जो देखा था कि अभी हमने डिफरेंट 4 तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं जो हमने जनरेट किए हैं. जनरेट करने के बाद उसको हमने अपलोड किया और व्यू किया है. अभी तक हमने सिर्फ क्या है, प्रीवियस स्टेप में सिर्फ जितने हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, वेदर इट इज बाउंड सर्टिफिकेट और डिस्चार्ज समरी, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ड्रंकननेस सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट, उनको सिर्फ हमने जनरेट किया था और अपलोड किया था. अब हमारे पास सबसे नीचे आता है रिपोर्ट्स टू सबमिट. हमें कौन कौन से इसमें से रिपोर्ट्स हैं जो हमें सबमिट करनी है पुलिस स्टेशन को. तो उसके बाद जैसे सपोज हमने इस एग्जांपल में देखा सर्टिफिकेट ऑफ ड्रंकननेस, इसके सामने एक सबमिट बटन आ रहा है. सबमिट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंफर्मेशन बॉक्स देगा कि क्या आप इस पर्टिकुलर ड्रंकननेस सर्टिफिकेट को सबमिट करना चाहते हो. तो जैसे हम ओके क्लिक करेंगे कंफर्मेशन बॉक्स पे, तो हमारा ये बेसिकली सर्टिफिकेट जो है ड्रंकननेस सर्टिफिकेट वो पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट हो जाएगा और पुलिस स्टेशन एडमिन नाउ कैन व्यू द ड्रंकननेस सर्टिफिकेट. और एक बार आपने किसी सर्टिफिकेट को सबमिट कर दिया, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको दोबारा रिवोक कर पाए. जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको डेट एंड टाइम डेट आ जाएगी कि आपने किस डेट को ये वाला सर्टिफिकेट सबमिट किया है. ईश्वर जी प्लीज कंटिन्यू. Thank you so much, Pavanji. Yeah. So this is the case right now, and before we move on to the police side to view this submitted copy, I'll just explain one more thing. We gave this patient as a simple injury, hospitalized. For example, take this particular patient was involved in a fatal accident. So in that case, treatment details and the medical reports tile, so these two tiles would be disabled. Why? Because there won't be any treatment given to a dead person. So in that case, there won't be any treatment details to enter to. So for that, we have disabled the treatment details tile, and there won't be any X-rays or CT scan or ECG done to a dead person. So for that case, there won't be any medical reports too. So for such instances, we have disabled these two, treatment details and medical reports tile, in case of fatal accident. Yeah, thank you, ईश्वर जी. ईश्वर जी ने अभी ईश्वर जी ने sorry ईश्वर जी. Sorry, you can carry on. ईश्वर जी ने अभी आपको बताया है कि हमने जो ये केस लिया था वो सिंपल एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइज का केस था, इसलिए आपको ट्रीटमेंट डिटेल्स और उसका नेक्स्ट बटन मेडिकल रिपोर्ट्स ये सब दिख रही थी. अगर सपोज ये फेटल एक्सीडेंट है तो उस केस में ट्रीटमेंट डिटेल्स और मेडिकल रिपोर्ट्स आपको व्यू नहीं होंगी, क्योंकि फेटल मींस कि जो भी हमारा पेशेंट आया है वो मींस उसकी मृत्यु हो गई है. अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसको ट्रीटमेंट क्या देना है, कुछ भी नहीं देना, उसको ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही इज ऑलरेडी डेड. और उसके बाद हमें उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स की जरूरत ही नहीं है. सो इन केस ऑफ फेटल एक्सीडेंट के केस में हमें ये दो टाइल्स नहीं दिखेंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स एज वेल एज ट्रीटमेंट.
सर ये फेटल के बाद जो है कि मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो जाएगा ही ना? Ishwarji, they are asking if this is a fatal case, then there is a need of post-mortem report. Yes, that should be requested from the police. The police will request in fatal cases for performing the post-mortem report. And as we shown, you can add the details of the post-mortem under this. And once all these 4 details have been given, for example, you can give the cause of death as per the post-mortem test, and who assisted the medical officer, and if there is any other details that needs to be given, that can be given under the remarks, and click on save. Once you click on save, the post-mortem certificate will be generated, and the generated copy can be uploaded and submitted to the police station. अच्छा, तो सर जी ये जो अभी ईश्वर ने बताया और पवन जी ने बताया ना, इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट करना है तो रिक्वेस्ट हमको पुलिस डिपार्टमेंट से ही आना चाहिए। तो इंडिविजुअल हॉस्पिटल एंड इंडिविजुअल जो एंटिटी है वो खुद ब खुद रिपोर्ट कर नहीं पाएंगे, वो ऑटोमेटिक उनकी जो डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगा। जो रिपोर्टनेस हमको चाहिए वो पुलिस से आ गया, तो वो पुलिस से अपडेट एंड मिलके वो अपडेट करके वहां पे वो अटैच करके फाइल सबमिट कर देंगे। वो पुलिस की लॉगिन की आईडी पर उनको वो मिल जाएगा रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट एंड पीडीएफ प्रोफाइल आपको वहां से वो डाउनलोड कर लेंगे, एंड वैसा वर्जा यहाँ से भी वो डाउनलोड कर सकता है ऑटोमेटिकली। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। Okay, thank you, Gauru ji. Yeah. And again, once you have submitted this certificate to the police station, you cannot add more details. So you can see here under this tile, we entered this, we uploaded the file, and we submitted this drunken drive certificate to the police station. And once submitted, you cannot add details or generate details. Every other button, add details, generate, and upload, these 3 buttons are disabled, and only one button, which is the view button, which has been given to view the certificate alone, is enabled in such cases. So you cannot add more details or even edit the drunkenness certificate details once it is submitted to the police station. Once submitted, it is submitted for final. तो ये जो तो ये जो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो हमारे ईश्वर जी बता रहे हैं अभी तक, जो हमने एक बार पुलिस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर दिया, उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ एडिट कर नहीं पाएंगे, एंड वहां पे उनको कुछ अपडेट दे नहीं पाएंगे, ऐड डिटेल्स, एडिट डिटेल्स कुछ कर नहीं पाएंगे। सो बिफोर सबमिटिंग द रिपोर्ट, बिफोर सेंडिंग द फाइनल रिपोर्टल सेक्शन, तो पहले ही द डिपार्टमेंट शुड एडिट एंड री एडिट इफ इट्स रिक्वायर। अगर कुछ एडिट करना है तो पहले ही करके बाद में ड्रंकन ड्राइवर सा जो भी रिपोर्ट हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया, सबमिशन रिपोर्ट हो गया, तो वहां पे रिपोर्ट को सबमिट करना है। तो उससे पहले अगर वो कर दिया तो दे विल नॉट बी एबल टू एडिट इट। ठीक है ईश्वर जी, कंटिन्यू। Yeah, thank you Gauru ji. Yeah, so that's it from the police, from the hospital side. I'm going to log off from here and show you how the drunkenness certificate is reflected in the police side. I'm going to log off, click the